गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या होती है एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट, क्या होते हैं। दीज आर द ड्रग विच एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड रिलेटेड ड्रग। दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट अल्फा और बीटा adrenergic receptor. These drugs are mainly divided into two groups, alpha adrenergic blocking agent और बीटा adrenergic blocking agents। सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में, क्या होते हैं। These drugs inhibit the adrenergic response mediated through alpha adrenergic receptor without affecting those action which are mediated through beta receptor. The action of these drugs include vasodilation of blood, increase in intestinal motility and hypotension. Some common example of drugs under the category include phenoxybenzamine, tolazolone, parazosine. हम बात करते हैं टोलाजोलिन, एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की। इसका आईपिक नेम क्या है, 2-बेंजाइल 2-इमिडाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इट इज एन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। It occurs as white crystalline or almost white powder, having no odor but with bitter taste. It is freely soluble in water and aqueous solution in acidic to litmus. The solutions are sterilized by filtration or autoclaving. जैसे आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हो, ये हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन हेटेरो एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई था हेटेरोसाइकिल कंपाउंड के बारे में। और हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज, इट इज यूज in the treatment of peripheral vascular disease. Preparation, tolozolene hydrochloride BP, tolazolene tablet BP, पॉपुलर ब्रांड परिस्कोर। हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। These drugs inhibit adrenergic response mediated through beta receptor. All beta receptors are competitive antagonists. Some common examples of this class include propranolol, Practol, timolol, pindolol, etc. हम बात करते हैं प्रोप्रानालोल की। ये एक बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट है और इसका आयोपिक नेम RS1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3,1 नेप्थोक्सिली प्रोपन 2-ऑल हाइड्रोक्लोराइड। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। It occurs as white or almost white odorless powder. इसका कलर के बारे में बात करें तो वाइट होता है और इसके अंदर odorless नाम मात्र के बराबर ही है। It is soluble
इन वाटर, यह पानी के अंदर घुल सकती है। द सोल्यूशन आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, सोल्यूशन को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग की सहायता लेंगे। इन एक्वस सोल्यूशन इट डिकम्पोज लीडिंग टू decoloration of the solution. Solution are most stable at pH 3 and decompose rapidly if made alkaline. Storage. Propranolol hydrochloride is stored in well closed container. नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेज के बारे में। यूजेज, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डिक अरेथमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, माइग्रेन, ग्लूकोमा और एंजाइटी। सॉरी स्टूडेंट। प्रिपरेशन। प्रोप्रानोल इंजेक्शन बीपी और टैबलेट आईपी और बीपी। और इसकी पॉपुलर ब्रांड क्या है? कार्डिलोम और सिप्ला। हम बीटा ब्लॉकिंग की नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, प्रेक्टोलोल नेक्स्ट ड्रग्स। आईयूपी का नेम क्या है इसका? 4,2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोऑक्सी एसिटिनालेट। Property, it is occur as white odorless powder with a bitter taste. It is slightly soluble in water and more soluble in chloroform. Solutions are sterilized by autoclaving or filtration. It should be kept in airtight and light resistance container. It is used in cardiac arrhythmia, essential hypertension and angina pectoris. ये थे हमारे एड्रेनर्जेनिक एंटागोनिस्ट। इसके बारे में कुछ ना पता लगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग। कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? ए नर्व सेल और न्यूरॉन इज बेसिक component for transmission of impulse in between two neuron in a gap which is called synaptic cleft. The conduction of nerve impulse from one neuron to other take place with the help of neurotransmitter. The neurotransmitter are released into synaptic cleft, which will forward with impulse to neuron and so on. The major kind of neurotransmitter is parasynaptic nerve system is acetylcholine. The
Effect of acetyl choline may be divided into type of physiological action. First muscarinic and second nicotinic. Muscarinic action include contraction and peristaltic motion in GIT and urinary tract, increased flow of most secretory glands, pupil contraction, peripheral vasodilation, and reduction in heartbeat. Nicotinic action include stimulation of skeletal muscle, autonomic ganglia, followed by blockage. Compound that mimic the action of acetylcholine or produce similar effect as acetylcholine does are called cholinergic drug. Acetylcholine is rapidly destroyed by cholinesterase enzyme near site of liberation. These drugs which inhibit action of cholinesterase enzyme are called as anticholinesterase drug. The drug block enzyme action and increase the concentration of acetylcholine in synaptic cleft and hence produce similar action of does acetylcholine. So they act by increasing acetylcholine concentration by inhibiting cholinesterase enzyme. ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. न्यूक्लियस, नर्व के अंदर न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, परिसाइनेप्टिक फाइबर और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. Classification. The drugs are classified on basis of their mechanism of action. Direct acting, indirect. Direct means acetylcholine analogous. Indirect means acetyl anticholinesterase agent. Acetylcholine analogous. These are also called as direct acting cholinergic drug or cholinergic cholinergic agonist. They act on cholinergic receptor nicotinic muscarinic in same way as acetylcholine. Example pilocarpine, carbichol, बीथानिकोल, मैथाकोलिन. सबसे पहले बात करेंगे पिलोकार्पिन नाइट्रेट. पिलोकार्पिन is a chief alkaloid obtained from the leaflet of Pilocarpus microphyllus. It has dominant muscarinic action properties. It occurs as colorless crystal or white or almost white crystalline powder which is hygroscopic in nature. It is less hygroscopic than pilocarpine hydrochloride. Hence it is more easy to handle. It is very soluble in water. Solutions are sterilized by autoclaving or filtration. It should be stored in a well-closed container or protected from sunlight. Usage. Pilocarpine hydrochloride is used
as 1 to 5% solution of miotic to constrict pupil. It is used to counteract effect of short-acting mydriatic on eye. It is also used in retard intraocular tension in treatment of open angle glaucoma. हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, एंटीकोलिनस्ट्रेज एजेंट. दीज आर कंपाउंड विच ब्लॉक एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एन एंजाइम विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ acetylcholine, thus inhibiting acetylcholine destruction and increasing its availability at nerve ending. Example: acerine, physostigma, neostigmine. एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, फायोसोस्टिग्मीन, एसिरिन भी बोलते हैं. आयुपिक नेम क्या है इसका? एस और आर, 3A8R, 1 2 3 3A8A हेक्सा हाइड्रो 1 3A8 ट्राई मिथाइल पायरोलो 2 3B इंडोल 5 मिथाइल कार्बामेल. Properties: it is used as physostigmine salicylate. It occurs as colorless or almost colorless crystal which gradually turn red on exposure to air or light. The color develops more rapidly when substance is exposed to moisture. It is springly soluble in water. स्टोर कैसे करेंगे इसको? इट शुड बी केप्ट इन वेल फिल्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. और इसके यूज क्या क्या? इस सोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं डिक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा. सोल्यूशन की मात्रा क्या होगी? 0.1 से 1%. एंड इट इज आल्सो यूज्ड मेन एल्काइल एज मोएटिक. Sometimes it is used in treating atony of urinary bladder. Popular brand Anti-Larian. हम बात करते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट. अभी बात थोड़े टाइम पहले पढ़ा आपने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और ये आ गए एंटागोनिस्ट. कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. These drugs block action of acetylcholine by inhibiting the interaction of acetylcholine with cholinergic receptor. These agents counteract gastrointestinal and urinary tract spasm, decrease the secretion of saliva, gastritis juice, and dilate the pupil of eye. All anticholinergic drugs are competitive antagonists. Classification: on the their chemical structure are classified into 4 main categories: amino alcohol ester, amino alcohol ether, amino alcohol amino amide. सबसे पहले बात करते हैं अमीनो अल्कोहल एस्टर. एट्रोपिन इज प्रोटोटाइप in the design of amino alcohol ester type of anticholinergic. Other important drugs of this class are hyoscine, homotropin, atropine, and hyoscine are alkaloids found principally in the plant of family Solanaceae such as Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, henbane, and the Datura species. The Solanaceae
alkaloid are the ester of bicyclic amino alcohol 3-troponol tropin with tropin and tropic acid, whereas hematotropin and propenthalin are synthetic analogues of atropine. एट्रोपिन के बारे में बात करते हैं. एट्रोपिन इज रेसमिक मिक्सचर and is formed from corresponding levorotatory isomer of hyoscine which possess S configuration. IUPAC name tropane 3-ine plus tropate sulfate. It possesses both central and peripheral action. It first stimulant and then depress CNS. Exert antispasmodic action on the smooth muscle. Properties. It occurs as colorless crystal or white crystalline powder. It effloresces in dry air. It is slowly affected by light. It is very soluble in water. Soluble are sterilized by autoclaving or filtration. Atropine salt are incomplete with bromide, iodide, alkali, and salt of mercury. It should be stored in closed container and protected from sunlight. Uses. Atropine is used as adjunct to treat of gastritis, gastric and duodenal ulcer. It is also used in the treatment of smooth muscle spasm. It has been used in the depressant action of CNS. It is used in the treatment of nerve poisoning by organophosphate. Popular brand name Atropizor. नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं. प्रोफेंथलीन ब्रोमाइड. NN diisopropyl N-methyl 2-xanthine 9-carbonyl ethyl ammonium bromide. Properties. Profenthylene bromide occur as white or yellowish white powder, slightly hygroscopic in nature. It is odorless and is very soluble in water, and a solution is acidic to litmus. The storage. It should be stored in airtight container. Usage. It is used as adjunct in the treatment of duodenal and gastritic ulcer. It is also used in antispasmodic agent. It is also used in the adjunct to X-ray examination of GIT tract or endoscopy. Popular brand Probenthine. एमिनो एल्काइल ईथर के एग्जाम्पल बेंजीट्रोपिन. और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट अमीनो एल्कोहल. These are compounds are characterized by presence of tertiary hydroxy group and amino propanol arrangement with these 3 carbon between hydroxyl function and amino function. Example of this class include piperidine, benzene, piperidine. IUPAC name bicyclo 2,2,1 hepta 5-ene 2-yle 1-phenyl 3-piperidine propanol. Properties. It occurs as white crystalline powder,
having no odor. It is light, stable in light and non-hygroscopic. It is practically insoluble in water. However, its hydrochloride salt is slightly soluble in water. It should be kept in airtight and light resistance container. Usage. It is used in the treatment of PD Parkinson disease to control muscle rigidity and kinesia. It is also used into acute crisis due to oculogration. Popular brand Daisky Con. Amino amide. These compounds contain amide linkage. Example: Tropicamide. 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 It occurs as white or almost white crystalline powder. It is slightly soluble in water. Storage. It should be stored in well closed light resistant container. Also used in ophthalmology. Popular brand My Dry Reel. थैंक्स स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा जो कुछ अभी मैंने रीड किया है। अगर कोई भी इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तब आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।